Jai Hind students, welcome to online class of Shri Ram Public School. In the previous class, I was explained chapter 12. Now today we start chapter 16 and chapter 13, 14, 15 I was explained before half yearly examination. Now chapter 16 is the congruency. What is the congruency? What is the congruent figure? If two figures have exactly the same shape and size, they are said to be congruent. If two figures have exactly same, it means that same shape and size also same, they are said to be congruent. For congruency symbol is given, this is the congruency symbol, and double is equal symbol, and one more symbol included, that is the, here is the also one more line, the here is given. For congruency we used symbol and some types of congruent figures. Next topic, some type of congruent figure. Two line segment are congruent if they have the same length. Line are said to be congruent if they have the same length. टू एंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम मेजर. एंगल कब कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे? जब दोनों क्या हों, दोनों को हम मेज़र करें और दोनों क्या हों, सेम डिग्री के हों, सेम, क्लियर, सेम मेज़र करें, सेम डिग्री के एंगल्स हों, तो वो क्या हो जाएंगे आपस में, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हो जाएंगे. लाइन की क्या हो, लेंथ सेम हो, तो वो लाइन्स आपस में क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट लाइन्स हो जाएंगी. क्लियर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द square. Congruent squares, if they have the same side length. Suppose two squares have the same length, two square but length is same, square all sides is same, but suppose two squares and both length, both sides is same, then the squares are said to congruent. Next is the rectangle. Two rectangle are congruent if they have the same length and same breadth. Clear. Rectangle क्या, rectangle opposite sides are equal. Rectangle क्या होते हैं, opposite sides equal होते हैं. But suppose we are talking about in two rectangles, then suppose they have the same length and same breadth. Got it? Now move on the circles. Congruent circles. Two circles are congruent if they have the same radius. Circle with the draw with the help of the radius. Then if the two circles have same radius, then we said the congruent circle. And last is the congruent triangle. This is the most important and chapter also based on the congruent triangle. Congruent triangle. Two triangles are congruent if pair of corresponding sides and corresponding angles are equal. Two triangles are congruent if pairs of corresponding side. Triangles congruent कब कहलाएंगे? If pairs it means pairs of congruent sides and congruent angles are equal, then they are congruent. जैसे इसमें देखिए AB इक्वल है किसके? AB इक्वल डी के एंड बी सी इक्वल ई एफ के, सी ए इक्वल एफ डी के, एंगल ए इक्वल एंगल डी के, एंगल बी इक्वल एंगल ई, एंगल सी इक्वल एंगल एफ. देन ट्रायंगल ए बी सी is congruent triangle डी ई एफ. Got it? But here student, for triangle congruency we apply the sum rule. We apply the sum rule, some property for triangle congruency. First is the SS congruency, triple S congruency condition. Triple S congruency condition. Two triangle are congruent if triple S means three side. Triple S means three side. Two triangle are congruent if three side, one triangle are respectively equal to three sides of the other triangles. I repeat again. Two triangle are congruent. Two triangle congruent कहलाएंगे if the three side of one triangle, एक
ट्रायंगल के तीनों साइड्स आर रेस्पेक्टिवली इक्वल, वो इक्वल हो किसके, दूसरे साइड्स के, दूसरे ट्रायंगल के थ्री साइड्स के इक्वल हो द थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल, मतलब दोनों ट्रायंगल्स के साइड्स क्या हो, आपस में सेम हो, तो क्या हो, वो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. बट दिस कंडीशन नेम इज ट्रिपल एस कंडीशन. This condition name is triple S condition, SSS condition. Now next condition is condition, another name is side 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 congruency. Side congruency. Case second is the SAS congruency, side angle side congruency. SAS congruency, side angle side congruency. Two triangle are congruent if two sides and the included angle of one respectively equal the two sides and the included angle of the other. Explain. टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट. अब देखिए टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएंगे, इफ़ टू साइड्स, मतलब दोनों ट्रायंगल के क्या ले लें, टू साइड्स ले लें, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड वन एंगल, दो साइड्स हो जाए और क्या हो जाए, इंक्लूडेड, उनके बीच के इंक्लूडेड वन एंगल, वन आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द अदर टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग द एंगल आर अदर, मतलब ट्रायंगल्स के क्या हो जाए, टू साइड सेम हो जाए एंड बिटवीन वन एंगल ऑल्सो सेम हो जाए, तो वो ट्रायंगल आपस में क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल कहलाएंगे. SAS इट मीन टू साइड एंड वन एंगल, टू साइड्स मिलने चाहिए इक्वल और एक एंगल मिलना चाहिए. क्लियर. ASA कॉन्ग्रुएंसी, इसके प्रीवियस जो भी हमने बताया उसका नाम क्या था, साइड एंगल साइड, और अब स्टार्ट कर रहे हैं एंगल साइड एंगल. ASA angle side angle congruency. Two triangle are congruent if the two angle and the included side are respectively equal to angle and the included side of the other. Two triangle are said to congruent if two angles, दोनों ट्रायंगल के बीच के क्या हो, दोनों ट्रायंगल के टू एंगल्स इक्वल हो और उनके बीच का एक क्या हो, साइड इक्वल हो, मतलब एंगल साइड एंगल, मतलब टू एंगल्स मिल जाए और एक साइड मिल जाए. क्लियर. बीच का साइड, तो वो ट्रायंगल आपस में क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, और इस कॉन्ग्रुएंसी का नेम हो जाएगा ASA. फिगर सब में आपको, फिगर आर शोन हियर, लुक हियर, फिगर ऑल्सो गिवन. नाउ questions also I will explain, then that's every congruency is clear in the questions also. Now fourth congruency is the RHS congruency. Fourth congruency is the RHS congruency, right angle, hypotenuse and side. Hypotenuse everyone know in the Pythagoras theorem, I was explain the Pythagoras theorem, everyone know the hypotenuse. Then right angle it means a triangle is make the 90 degrees called the right angle triangle. Right angle, hypotenuse and side. Two right triangle are congruent if the hypotenuse and one side of the first triangle are respectively equal to the hypotenuse and the one side of the second. मतलब टू ट्रायंगल्स ऐसे हों जिनके क्या हों, आपस में दोनों में राइट एंगल, मतलब दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री फॉर्म हो रहा हो, दोनों ट्रायंगल का क्या हो, हाइपोटेनस सेम हो, दोनों ट्रायंगल में क्या हो, आर मीन्स राइट एंगल, दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री फॉर्म हो, एच मीन्स हाइपोटेनस, दोनों का हाइपोटेनस सेम हो, और एस मीन्स साइड, कोई एक साइड सेम हो. क्लियर. आई रिपीट अगेन, आर मीन्स राइट एंगल 90 डिग्री फॉर्म होना चाहिए, एच मीन्स हाइपोटेनस, दोनों का हाइपोटेनस सेम होना चाहिए, और कोई एनी वन साइड इन बोथ ट्रायंगल्स, if equal, then the triangles are said to the congruence. Now here student, I explain the all cases of the congruent triangles. Now exercise 16 is the based on this exercise. We start in the next class. Firstly, carefully read and write.
Clear? All cases and the congruency definitions also, congruency square, congruency of triangle, circle, etc. Clear? Thank you everyone. When you have doubt, ask in evening class.